हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम हार्डवेयर में जो मदरबोर्ड का हमारा टॉपिक चल रहा है मदरबोर्ड का, उसमें आज हम स्टडी और मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड कनेक्टर्स के बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो आप लोग हम लोग पहले के वीडियो में CMOS बैटरी के बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझा था, वो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ज़रूर आपको कमेंट करके बताइए। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड connectors are ports or sockets that are built into the motherboard and are used to connect various prepare peripherals to the computer. चलिए हम इसको हिंदी जानते हैं। मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड कनेक्टर पोर्ट होता है या सॉकेट्स होता है जो कि मदरबोर्ड में बने होते हैं ये। और ये जो है विभिन्न ब्रांड उपकरणों में, मतलब कि वेरियस प्रिफेयर, ये कंप्यूटर से कनेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम मदरबोर्ड में आमतौर पर पाए जाने वाले कुछ इंटीग्रेटेड कनेक्टर के पार्ट्स जानते हैं। तो पहला है USB, एक का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा ईथरनेट पोर्ट। थर्ड पॉइंट ऑडियो पोर्ट्स। चौथा पॉइंट वीडियो पोर्ट्स। फिफ्थ पॉइंट PS2 पोर्ट।
6 point serial and 7 points SATA ports. Eight point and 2 slots. Nine points PCIe. चलिए इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। प्रिपेयर component interconnect express slots. लास्ट हमारा 10 पॉइंट हुआ। वोल्ट पोर्ट्स। हमने जो मदरबोर्ड के इंटीग्रेटेड कनेक्टर जो कंपोनेंट थे वो आपको 10 पॉइंट्स में जितना था हमने बता दिया। और इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम आईडी पे मेरा जुड़ सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं लर्निंग एकेडमी 2.0। तो वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।